जैन साहब, श्रीमान हविलदार रविंद्र सिन्हा, मेरा फायर टास्क बताने जा रहा हूँ। भैया रेंज 110 ऊंचा वाला दरखत का भाया किनारा से दूर तक। दाहिना रेंज 150 ऊंचा वाला मकान से दाहिना किनारा से दूर तक। भैया बताया हुआ अच्छे लेकर दाहिना बताया हुआ तक ये मेरा जिम्मेवारी इलाका है। इसमें अगर कहीं अचानक दुश्मन निकल जाए तो मैं सेक्शन कमांडर का हुक्म लेकर दुश्मन का ऊपर फायर करूंगा। अगर इजाजत लेने का मौका ना मिले तो मैं अपना अपनेशन बचाते हुए दुश्मन का ऊपर फायर करूंगा। अभी मैं देखभाल पोजीशन में हूँ। এইটো আছিলে আমাৰ তাৰমানে প্ৰতিজন আমাৰ জোৱানৰ বিঅপিত যেতিয়া থাকে তেওঁলোকৰ এৰিয়াৰ ৰেছপনচিবিলিটি থাকে, যিটো তেওঁলোকৰ কেম্প এৰিয়া থাকে, কেম্প এৰিয়া যিটো সুৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰতিজনৰে এটা এৰিয়া দিয়া থাকে আৰু ৰাতিপুৱা গধূলি তেওঁলোকে সেইটো জেগাত মানে পজিশ্যন লৈ গোটেই জেগাটো চাব লাগে, সেইটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব। গতিকে তেনেকৈ কৰি আমাৰ এৰিয়াটো একেবাৰে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে আৰু সেই এজন মানে জোৱানৰ এৰিয়াটো কেনেকৈ মানে চাই বা কেনেকৈ মানুহৰ আগত বক্তব্য ৰাখে তেওঁৰ এৰিয়াটোৰ বিষয়ে কোনোবা ডাঙৰ অফিচাৰ আহিলে সেইটো তেওঁ দেখুৱালে। ধন্যবাদ।